Sycamore audit risk करना है तो चालू करते हैं. It is 1st of July. You are audit supervisor of Maple Co. and are currently planning the audit of existing client Sycamore, whose year end 30th April 15. Sycamore is a pharmaceutical company which manufactures, supplies a wide range of medical supplies and draft financial statements show revenue of blah blah blah. But बुरा 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 लगता है जब ये लोग न्यू क्लाइंट नहीं देते तो अभी. During the year, a review of plant and equipment in the factory was undertaken, and a surplus plant was sold, resulting in a profit on disposal of 2,10,000. Check the sales invoice with the asset register, the addition of the value. हाँ. Disclosures regarding IAS 16 बोल देंगे, but तो तूने क्या बोला? फिर से एक बार बोलियो. Review the sales invoice and compare with the non-asset register to check the valuation of the asset. Sales invoice to the और ये asset भी register. check how often the asset has been declared. ये profit क्या करेगा? ठीक है, सही है. Depreciation में पॉइंट डाल सकते हैं, बट डालोगे. Sycamore's previous finance auditor left the company in December 14 after it was discovered that he had been claiming fraudulent expenses for the company for a significant period of time. New finance director वो तो बाद में आएगा, but इसके पहले कि have the required accounting treatment been provided by the entity and required. And what initiatives they have taken that such fraudulent activities won't happen in the near future. उसके बाद और क्या है? Discuss how they detected and what how they detected the fraud was detected, and what are the how they prevent it and what are the circumstances the action has the validation has been taken for any further क्या बोलते हैं इसको? Prevention of fraud. Prevention, ठीक है, सही है. A new finance director was appointed in January 14, who was previously a finance controller of a bank, and she has expressed a surprise that Maple & Co. had not uncovered the fraud under last year's audit. तो मैं तो ये बोल रहा कि discuss the compatibilities and skills and expertise of the new finance director, पर इन्होंने पहले ही बोला हुआ है finance controller, तो मुझे पता नहीं कि मैं पॉइंट डाल सकता हूँ या नहीं. मेरे को उसका क्लियर है. मैं ये बाद में के लिए रखूंगा, अगर कम पड़ेगा तो ये वाला डाल दूंगा. During the year, अब तक कितना 2 पॉइंट हो गया ना? हाँ. During the year, Sycamore has spent $1.8 million on developing several new products. These projects are different stages of the development, and draft financial statements show a full amount of $0.8 million with the intangible assets. इतना तो वही है. Obtain a breakdown of the development. Obtain a breakdown of the developing several new products. 1.8 million breakdown, and assess the breakdown as per the different stages of development, and if they have been capitalized or expensed, any research expenditure should be expensed, and any ज़्यादा elaborate कर दिया. क्या any development expenditure should be capitalized. IAS 38. Thus, in order to fund this development, $2 million was borrowed from the bank and is due for repayment over a 10-year period. The bank has attached minimum profit targets as part of the loan covenant. So अगर minimum profit target रखें तो फिर fraud होने के chances है. Manipulation of the ratio. क्या? एक मिनट. Manipulation of the ratios can be take place to show the good figure in the statement. Discuss with the management if any covenants has been breached for the loan. Review the terms and conditions of the bank. How often they pay the interest and they have a sufficient cash flow to pay the repayment of the bank. How are they intending to repay the loan? बराबर वो डाल देंगे.
अपन जितना कर रहे हैं उतना सफिशिएंट है क्या? ज्यादा ही बोल रहा था। ज्यादा ही बोल रहे हैं क्या? ठीक है, मेरे को पता नहीं कैसा लगता है कि वो सफिशिएंट नहीं था जब अपन टाइप करते हैं. The new finance director has informed the audit partner that since the year end has been increased number of sales returns and that in the month of May, over 0.5 million of the goods sold in April were returned. Discuss with the proper accounting treatment with the management and have they removed the 0.5 million from their revenue figures. Review that the post I don't know ये such as control test का बोल रहा हूँ ना review that any credit note has been received post वो तो बोला ही है कि it has been received. Discuss why they discuss with the management why the credit notes have been received or why there have been an increased number of sale returns. हाँ ऐसे why तो बोल सकते हैं और फिर नीचे देखो वही वापस से प्रोफेशनल स्पेक्टिज्म वाला and B हाँ. वाला Sycamore decided to outsource its payroll function to the external service organization. So outsource कर रहे हैं तो discuss with the management the capabilities of the outsourced external service organization and take permission from the client to contact the to contact the outsourced firm in order to ask for the required documents. Type 1 and type 2 documents should be asked or should be requested. तुझे कुछ ऐड करना है? वही हो गया ना और क्या This service organization handles all the elements of the payroll cycle, sends monthly reports to the Sycamore which detail wages and salaries and statutory obligations. हाँ, review एक बार कर लेना कि assess the reasonableness of the monthly reports and are they correct वगैरह. फिर Sycamore maintained its own payroll records until at which the point of the records were transferred to the service organization. So transfer of payroll records. So during the data transfer, review what monitoring controls were placed by Sycamore and Co. And what monitoring. and a review should be take place while transferring the data If the opening and closing balances, the auditor should check match the if the opening opening and closing balances match on with the both the data. क्या यार? Match during the data process. क्या हो रहा है यार? इंग्लिश खराब क्यों हो रही है? पता नहीं. ऐसा ले रहा हूँ ना. Maple and Co attended the year-end inventory count at Sycamore's warehouse. The auditor present raised concerns that during the count there were movement of goods. So movement of goods should be seized. If it is not possible, अभी वो अपन चेप सकते हैं कि if it is not possible, then a proper split between work in progress, finished goods, and raw जो वो material तो should take place and they should be kept separately during the inventory count. ऊपर से ही बोला I'm मैंने. not sure if that's ऊपर इसका है से ही ना बोला. ठीक है ये रिकमेंडेशन लग रहा है मुझे ये पर देख लेते हैं. सिकमोर एंड को का डायरेक्टली पहले तो टेबल देख लेते हैं, बाद में छोटे आंसर्स भी देख लेंगे. ये मेरे को ठीक है नहीं आ रहा था एक्चुअली. प्रॉफिट ऑन डिस्पोजल ऑफ पीपीई. Surplus अच्छा वो plant, property, and equipment sold during the year, resulting profit of disposal. Significant profit or losses on disposal are an indication that the depreciation policy of plant and equipment may not be appropriate. तूने बराबर बोला, तुझे बोलना चाहिए था depreciation policy के बारे में. She may be overstated as a result. पूरा तलकीन मैं बोला तो ज्यादा हो जाएगा बोला कि इसलिए ज्यादा मैंने हो थोड़ा जाएगा यार. यही मतलब मुझे लगता है डिस्पोजल के वक्त अपन डेप्रिसिएशन के पॉलिसी के बारे में ही बात करती है बिकॉज वो अंडरस्टेट हो जाती है ना. नहीं नहीं सॉरी, डेप्रिसिएशन पॉलिसी में भी ओवरस्टेटेड. हाउ इज इट ओवरस्टेटेड? ओवरस्टेटेड मतलब ज्यादा डेप्थ का क्या तूने है कर डाला तो जो है जल्दी बिक जाएगा ऐसा. लुक मैं क्या लिखा सिग्निफिकेंट प्रॉफिट और लॉस और डिस्पोजल आज इंडिकेट दैट डेप्रिसिएशन पॉलिसी ऑफ प्लांट मे नॉट बी अप्रोप्रिएट नहीं होगा तो फिर डेप्रिसिएशन में भी ओवरस्टेटेड हम ज्यादा डेप्रिसिएशन मार रहे हैं ऐसा कुछ कर बोल
may not there is a minimum accurately profit. calculate the overstated profits. ठीक है, एक बार अभी ये पढ़ लेते हैं, पता तो चल गया. Discuss the Discuss the depreciation policy. depreciation policy for plants and equipment with the finance director as to the reasonableness. बराबर ये पढ़ना पड़ेगा reasonableness. ठीक है, तो प्रॉफिट एंड लॉस क्या है? Disclosure calculation and agree. अबे और यार, ये हमें suppose recalculate तो हमेशा करता ही है. Recalculate the profit and loss on disposal calculations and agree items to supporting documentation. recalculate नहीं पड़ा था क्या? नहीं यार, मैंने IAS 16 वगैरह बोल दिया. वो मेरे को हर इसमें चेपना नहीं चाहिए. IAS 16 या IAS के बारे में पता है तो. तो वो तो बोल रहा हूँ ना कि ये पहले रिकॉर्ड पहले पहले अपना ऑडिट रिस्क और ये हो रहा था. रिकमेंडेशन थोड़ा टफ लग रहा था. अभी रिकमेंडेशन याद है. ऑडिट रिस्क में वाट लग रही वो हो है. रहा है. ना तो वाट लग रही क्लिक है. क्यों नहीं अपन हो रहा ज्यादा है बोल यार? रहे हैं. अपन अपन देख कैसे होता है, एक बार हो गया ज्यादा नहीं. बोल. हाँ, अपन ज्यादा बोल रहे हैं. आज एक काम करेंगे, आज एक टेस्ट और रिकमेंडेशन भी कर ही देंगे. कि आज 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 अपन रिस्क करेंगे ना, तो देखते कंट्रोल और ये कितना याद रहता है. ये क्या था वो? क्यों था वो? वैसे तो स्लिप हो गया. बॉस भी बोल रहा है भाई. फाइनेंस डायरेक्टर फ्रॉड. सिकामोर प्रीवियस फाइनेंस, ठीक है, वो लेफ्ट कर दिया तो देयर इज अ रिस्क दैट दे हैव अंडरटेकन फ्रॉडुलेंट ट्रांजैक्शन. दीस मे नॉट बी रिटन ऑफ, will need to यूज be द written पर्सनल off in the डॉक्यूमेंट statement फॉर of द profit and पर्सनल loss. यूज बना एक सकते. मिनट रुक जा. these uncalled financial, हाँ ठीक है. Discuss with the finance director what procedure they were adopted. ठीक है. Addition, the team should maintain professional skepticism and be alert to risk of fraud. ये डाल सकते हैं. They have adopted frauds. ओह सॉरी, तेरे को चाहिए था. रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा. नहीं हो गया. हो गया. हो ओके. गया वही. कॉम्पिटेंस, मैंने बोला ना, कॉम्पिटेंस का भी डाल सकते हैं. There is a risk that the new financial director is not sufficiently competent to prepare the financial statements. The financial statements could contain errors. During the audit, ये देख इन्होंने पता है क्या किया है. देखा माता तू वाली देख, मैं शायद गलत गलत भी हो सकता हूँ. इन्होंने ऑडिट रिस्क को ना, अगर जा जा जाके फिर तो बताता हूँ. इन्होंने ना ड्यूरिंग द ऑडिट का. ऑडिट रिस्क के वाले ये सेक्शन को इतना बड़ा कर दिया और हाँ. ऑडिट रिस्पॉन्स को इतना छोटू सा रख दिया. तो अभी अपने को लग रहा है कि आंसर बड़ा है. एक्चुअल आंसर बड़ा नहीं है. तो बोला कि मेरे को लग रहा है आंसर में छोटा लिख रहा हूँ ये वो. ड्यूरिंग द ऑडिट केयरफुल attention should be applied to any changes in the accounting policies and in particular any key judgmental decisions made by the finance director. Proper attention should be devoted for accounting treatment policies and a particular judgment decision made by the finance. ठीक है. एक तो उसका अटेंशन हो जाएगा यहाँ पे. फिर उसका अकाउंटिंग पॉलिसी जो लोग क्या दे रहे हैं. और बाय डिसीजन बाय द ये फाइनेंस डायरेक्टर. ठीक है. मैं एक बार जरा दूसरे पेज पे आता हूँ. मेरे को एक चीज चेक करनी है खाली. The finance director was adopted appointed in January 15 was previously a financial controller of the bank. She is surprised that इतना ही बोला है तो ये अकाउंटिंग पॉलिसी पे शायद क्लिक नहीं हो पाता. ठीक है. डेवलपमेंट कॉस्ट ड्यूरिंग द ईयर ये तो सिकामोर आता है. हैज, हाँ एक मिनट, breakdown of the वही. development expenditure should be reviewed. एक मिनट रुक जाना. And tested in detail to ensure that only projects which meet capitalization criteria including the intangible assets bank will be expensed. हाँ ठीक है, पूरा बोला था. फिर न्यू बैंक लोन, एक मिनट ना. ड्यूरिंग द ऑडिट द टीम विल नीड टू कंफर्म दैट 22 million लोन फाइनेंस वाज रिसीव्ड. अरे स्प्लिट बिटवीन करंट एंड नॉन करंट लायबिलिटीज. शिट. इन करंट एंड नॉन करंट लायबिलिटीज ये भूल गए. लोन लेते ही स्प्लिट मार देने का. To be reviewed in detail to ensure compliance with the relevant accounting standards. पहले तो पूरा बेसिक है, पहला तो फुल बेसिक है. फिर बाद में जो अपन ने बोला है वो भी नहीं है क्योंकि फाइनेंस कॉस्ट आ जाता है. The finance cost should be recalculated and any increase any increase agreed to the loan documentation for confirmation of interest rate and cash book and bank statements and confirm to the amount was paid and is not therefore year end payable.
नहीं है। अच्छा, इन्होंने ओवरड्राफ्ट कोवेनेंट, हाँ अलग पॉइंट अपन ने ही बनाया था, अलग पॉइंट। अपन ने अलग पॉइंट बनाया था क्या इसका? नहीं, अलग पॉइंट नहीं बनाया था। चुप पे तुम, म्यूट पे, हाँ काउंट ढंग से थे फुल। हाँ, एक मिनट वापस आ जाओ आंसर। बैंक लोन का अलग पॉइंट बना दिया, ड्यूरिंग ओवरड्राफ्ट ड्यूरिंग कोवेनेंट्स ऑडिट का ही रिव्यू अलग पॉइंट बना। ये हो जाएगा एडिशनल split of current and non-current assets and the disclosure of the loan should be reviewed in detail. Compliance with relevant accounting standard. Accounting standard. The team should confirm the coupon and leasing loan is finance received and additional split should be loan should be reviewed and finance should be मतलब recalculated. Yeah. तू तेरे रेड मार्क्स को ऐसे ही रख, मुझे बस 1 सेकंड आने दे ऊपर, 1 सेकंड आने दे ऊपर। अरे यार 1 मिनट है। प्रॉफिट, सही है। आगे जाऊं? तो लिखा क्या लेकिन मैंने हाँ। वही कि न्यू बैंक लोन आने पे स्प्लिट बनाना चाहिए, और एक क्या बोलते हैं, और फाइनेंस कॉस्ट बढ़ जाता है क्योंकि इंटरेस्ट, वही सब लिखा है। ओके। हटा दे। ओवरड्राफ्ट कोवेनेंट्स, new bank loan has minimum profit target covenant. If it is breached, the loan would be instantly repayable. There is a risk of manipulation of profit to ensure that the covenant is met. There is a risk the liability is incorrectly allocated as a non-current liability rather than a current liability if the covenant is breached. If the company does not have sufficient cash to meet the repayment, then there could be going concern implication with the risk of inadequate disclosure of going concern issues. ठीक है? The team should maintain their professional skepticism and be alert to the risk that the profit has been overstated to ensure compliance with covenants. एक minute, एक minute. The team should maintain professional skepticism and be alert to condition the profit overstated. Okay. Review covenant calculations prepared by the company at the year end and identify whether any defaults have occurred. Review the disclosure of the loan as current liability. Okay. Review cash flow forecast and inquire of the management how they will deal with the, the loan repayment. The team should maintain a professional and profit to ensure the compliance present to the basic. Review Loan is a current liability. So, सुन तो loan is a current liability. Bonus to directors is also a current liability. the information to the company and the year and identify whether any defaults have been occurred within the disclosure of the loan and current liability. Uh,
For management how it's like they both are occurring in the current liability because 12 month के अंदर क्या क्या? ओवरड्राफ्ट को 12 महीने के अंदर देना है इसके लिए करंट लाइबिलिटी हो गया ना क्या डेटर्स कौन भी तू इस साल में दे रहा है, इसलिए करंट लायबिलिटी हो गया। एक बार पढ़ लेगा फिर से। The team should maintain their professional skepticism and be alert to risk that profit has been overstated to ensure compliance with the covenants. Review covenants calculation prepared by the company at the year end and identify whether any defaults have occurred. Review the disclosure of the loan as a current liability. Review the cash flow forecast and inquire. Review the cash flow forecast of the management, how they deal with any need to make the loan repayment. ठीक है। ये वाला जो पॉइंट था ये वाला लास्ट है ये यहाँ पे आएगा लास्ट में प्रोसेस स्पेक्टिज्म उसे यूज करना है तो पहले ये आएगा कैलकुलेशन बराबर हुई है हाँ, कंप्लाइन विद द ईयर राइट राइट, वो अपना सेकेंडरी पॉइंट है। हमेशा प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म अपन एंड में ही डालेंगे। कन्वेंट कैलकुलेशन ठीक है। सेल्स रिटर्न, there have been significant number of sales return have made subsequent to the year end. As these relate to pre-year end sales, they should be removed from the revenue in the draft financial statements and inventory reinstated. instead If the sales return have not been correctly recorded, then revenue will be overstated and inventory understated. रुक जा। ठीक है Then revenue रिव्यू एक मिनट रुक जा। रिटर्न नहीं है तो रेवेन्यू ओवरस्टेट हो जाएगा और इन्वेंट्री अंडरस्टेट कैसे होगी, क्योंकि सेल्स रिटर्न हुआ है। रेवेन्यू ओवरस्टेट तो होगा, वो तो अगर सही है। सुन अगर सेल्स रिटर्न हुआ तो तूने इन्वेंट्री को रिकॉर्ड करनी चाहिए थी तो इन्वेंट्री तूने कम दिखाया अंडर स्टेटेड है एज हाँ, कम्पेयर टू तेरा प्रॉफिट भी अंडर स्टेटेड आया समझा अगर क्योंकि इन्वेंट्री वापस आएगी वेयर हाउस में तो बढ़ जाए, तो अंडरस्टेड होगा तो बढ़ जाएगी वो, राइट। बढ़ आगे। बढ़ना चाहिए review of sample of the post year end to sales return and confirm they have been related to the pre-year end sale and that the revenue has been reserved and the inventory included in the year end ledger. वापस से रिकॉर्ड कर देगा उसको pre-year end. In addition, the reason for the increased level of return should be discussed with the management जो अपने बोला why this will be helpful. This will be helpful. Assess if there are underlying issues with the net realizable value. सही है, एक मिनट रुक जा, मैं आता हूँ ऊपर। सही है। आउटसोर्स पेरोल फंक्शन ड्यूरिंग द Sycamore outsources payroll function to external service organization. Detection risk arises as to whether sufficient appropriate evidence is available at the Sycamore to confirm the completeness and accuracy of the controls over the payroll cycle and liabilities at the year end. Discuss with the management the extent of records maintained at Sycamore for the period since 15 and any monitoring controls which have taken place over the payroll. Consideration should be given to contacting the service organization's auditors to confirm the level of controls are in place. Type 1 and 2 report अब be requested. Report could be requested. मेरा पॉइंट लग रहा है डिस्कस विद द मैनेजमेंट एक्सटेंड ऑफ द रिकॉर्ड मेंटेन्ड बाय सिकमन कंपनी फॉर द ईयर एंड मॉनिटर द कंट्रोल व्हिच हैज बीन अंडरटेकन बाय द मैनेजमेंट ओवर पीरियड मुझे यहाँ तक का समझा बस ठीक है मतलब तू खाली उनको कंसीडर शुड कांटेक्ट बी करेगा, तू खाली उनके आउटसोर्स जो फर्म है ना उसको तू खाली कांटेक्ट करेगा और डॉक्यूमेंट्स मंगाएगा, कौन से टाइप 1 और 2, बस वो याद रख ले। टाइप 1 एंड टाइप 2 और टाइप 2। discuss with the management that appropriate documentation relating to the payroll function has been maintained by the company in the period. Second, contact the outsourcing company of payroll to obtain a sufficient appropriate evidence
and related reports which they have made in regarding the payroll वाला और फिर type 1 type 2 हाँ एक मिनट ना, सिंस ना 15 उन्होंने कब दिया था, वाह 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 वाह, एक मिनट ना, पेरोल उनको 2015 उन्होंने जनवरी 15 तक अपने पास रखा था। उन्होंने जनवरी 15 तक अपने पास रखा था, हम्म, और फिर उन्होंने मई 15 को हम्म। उनको दिया। तो बीच के 6 महीने उन्होंने अच्छे से रिकॉर्ड नहीं किया इन्वेंट्री, ऐसा। अब उनके पेरोल फंक्शंस। नहीं रे खाली चेक करना कि मेंटेन किया है कि नहीं किया उतना डीप नहीं जाना ठीक है, उनकी ईयर एंडिंग में है क्या? एक मिनट में वो देखने जाए, तो उनकी वैसे ईयर भी एंडिंग में है। ऊपर जाना ऊपर जा क्या लिखा है उन्होंने उनकी ईयर एंडिंग में हाँ है। मैं है देन ठीक है, फिर ठीक है। मतलब ये लोग बोल रहे हैं कि देख जनवरी में उन्होंने अंडरटेक किया था कि तुम मनाओगे तो फ्रॉम रुक 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 ऊपर जाऊं? नहीं 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 कुछ जैन से लेके मई तक वो लोग ने ये किया और मई में वो लोग ने क्या किया रिपोर्ट किसको दे दी कंपनी को समझा और ये वाला जो पीरियड था इसमें वो आउटसोर्सिंग कंपनी ने काम किया डेटा निकाला सही है। समझा जनवरी से लेके मई तक दिया काम किया फिर रिकॉर्ड उन्होंने कंपनी को दे दिया मई में सही है। जैसे अगर तू डेट वेट नहीं लिखा तो भी चलेगा जैसे अगर लिखते हैं वही डेटा ट्रांसफर, डिस्कस विद द मैनेजमेंट द ट्रांसफर प्रोसेस अंडरटेकन एंड any controls which were put in place to ensure the completeness of the कंप्लीटनेस एक एंड मिनट, ये इधर भी अपन ने मॉनिटरिंग कंट्रोल्स प्लेस किए थे ना, हाँ। बस वही चेक करना था। मॉनिटरिंग कंट्रोल्स आर टेकन which were put in place to ensure the completeness and accuracy of data where possible under, अरे भाई, क्या होता है पता है? तू जब मार्क करता है ना तो नीचे से लिख के आता है राहुल, राहुल भाटी। ये क्यों आता है मेरे को समझ नहीं आता है मेरे को भी नहीं चाहिए क्योंकि मेरे तू को चेंज पढ़ने में कर रहा है होगा इसीलिए। ये where हटा नहीं सकते वो possible undertake where possible undertake the test of controls to confirm effectiveness of the transfer controls, ठीक है? where possible undertake test of controls. एफिशिएंट In addition perform substantive testing on the transfer of information from old to new system, ठीक है? बराबर एक मिनट, हाँ अदिति को कुछ तो केस स्टडी में प्रॉब्लम हो रही है। 222 वाले अपन उसके साथ भी करते हैं, पहले ये जरा खत्म कर देते हैं। तू सोएगा नहीं दोपहर को तू सोने वाला है? सोच रहा हूँ एक लाइक आंसर कर दे नैप सो। 10-15 मिनट्स वापस या क्लास मेरा वाला 10-15 ना, दो घंटा हो जाता है मेरा 10-15, तो मैं। नहीं 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 टाइमर सेट करके रख फिर 10 मिनट बाद वापस से जूम मीटिंग पे आना थोड़ा रिफ्रेशिंग होता है वो मैं सोच रहा हूँ आज भी जाऊँ से वहां पे सैंडविच खाने पड़े यार, कल ही जाके खा के आया हूँ सैंडविच, तो ये सही में। पढ़ाई करना रोज खाऊंगा, अरे वॉक के लिए जाने का सोच रहा हूँ यार, तभी। नहीं 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 जाने का पढ़ाई स्विमिंग इंपॉर्टेंट चला है जाऊंगा, स्विमिंग चला जाऊंगा, बट नहीं चाहिए यार, तो फिर तू सर्दी हो। चाहिए तो एग्जाम के बाद में तू अपने कांदीवली से अंधेरी चल के जा वॉक के लिए Where possible, undertake test of controls and confirm the effectiveness of the controls, कि जो भी ट्रांसफर हुआ है उसका इफेक्टिवनेस बस एक बार चेक कर लेना। एडिशनल टेस्टिंग शुड बी परफॉर्म्ड। ये भी बोल सकते हैं ना कि प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म शुड बी अप्लाइड ड्यूरिंग दिस टाइम। नहीं, एक्चुअली वो खाली ट्रांसफर ही कर रहा है ना, तो फ्रॉड तो होगा नहीं। बट हाँ ऑडिटर शुड बी एक्स्ट्रा केयरफुल फॉर एनी एरर्स, फॉर द रिस्क ऑफ एनी एरर्स। क्या बाल बना रहा है? In addition, re-perform the substantive testing on the transfer of information from the old to new system. Perform substantive testing on the transfer of information from the old to the new system. हाँ भाई हम कंप्लीटनेस एक्यूरेसी देख लेंगे हम एफिशिएंटली भी देख लेंगे कंट्रोल वर्क करें कैमरा और ट्रांसफर फ्रॉम ओल्ड डेटा टू न्यू डेटा भी देख लेंगे डन हाँ, डन डन
Done. चल आगे बढ़. Inventory count movements. हाँ ये तो पता है. During the final audit, the goods received note and goods dispatched note received during the inventory count should be reviewed and followed through it into the inventory count records as correctly included or not. Okay, ये राइट आंसर तो उन्होंने पूरी की पूरी अलग ही बोल दी अपने हिसाब से, तो अपन ने जो किया था वो इन्वेंटरी. ये मैंने टेस्ट ऑफ कंट्रोल में सबसे से क्वेश्चन में पढ़ा था. ये रिव्यू वही. द लास्ट डेट ऑफ द गुड रिसीव नोट एंड गुड डिस्पैचमेंट टू चेक द एक्यूरेसी ऑफ Exactly. द स्टॉक फॉर द हाँ करंट ईयर. वही यार, इन्होंने यहाँ बोल. During the Sycamore co's year-end inventory count, there were movement of goods in and out of these goods in transit were not carefully controlled when goods could have been omitted or counted twice, or overstate or understate the inventory. एक मिनट रुक जाओ लेकिन. During the final audit, the goods received note and goods dispatched note during the inventory count should be reviewed and followed through into the inventory count record as correctly included or not. Yeah, मजा नहीं आया. ये मैं नहीं लिखूंगा अगर एग्जाम में आया तो. कुछ और लिख दो इसमें क्या. वही. क्या है ये कौन सा आंसर है. वही 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 रुक जा, अभी मैं ऊपर जा रहा हूँ. इसी पे था ना अपन. हाँ. स्टेट मेपल एंड कोज रिस्पॉन्सिबिलिटीज in relation to prevention and detection of fraud and error. तो ISA 240 ना. Yes. Maple and Co must conduct an audit in accordance with ISA 240. The auditor's responsibility relating to fraud in the audit of financial subject, ठीक है, and are responsible for obtaining reasonable assurance that financial statement. Reasonable assurance तो अपन लेते ही हैं. Obtain reasonable assurance if the financial statements taken as a whole are free from material misstatements, whether caused by fraud or error. In order to fulfill this responsibility, Maple and Co are required to identify and assess the risk of material misstatement in the financial statements due to fraud. They need to obtain sufficient appropriate evidence regarding the assessed risk of material misstatement due to fraud through designing and implementing appropriate responses. In addition, Maple and Co must respond appropriately to the fraud or हाँ मतलब एक मिनट, Maple and Co should respond appropriately to the fraud or suspected fraud identified during the audit. When obtaining reasonable assurance, Maple and Co is responsible for maintaining professional skepticism and being alert to conditions where सब चेप देंगे. Considering the potential for management override of the control. Consideration should be given for the potential of management override of controls and recognizing the fact that audit procedures which are effective in detecting error may not be effective in detecting fraud. Okay. जो procedures, the procedures that can be used for detecting errors may not be used for detecting frauds. To ensure that the whole engagement team is aware of the risk and responsibilities for the fraud, ISA is required that a discussion is held within the team. Sorry, what? It will ensure that the whole engagement team is aware of the risk and responsibilities. ISAs require the discussion should be held within the team. For members not present at the meeting, Sycamore's audit engagement partner should determine which matters to be communicated to them. If fraud is detected, the auditor must report to the management and those type of governance. Basic ही था मेरे को लगा. एक मिनट. पता तेरे को कैसा? Reason was some of the fine statement taken the place free from material statement responsibility of our companies to identify statement due to fraud, identify the options of which appropriate evidence assessment of material due to fraud, designing, implementing or appropriate response respond appropriately to fraud and respect ठीक है करना है. फिर obtain reasonable assurance करना है, maintain cover system and potential override fact that of audit procedure which are affecting detecting error may not be effectively in detecting fraud. ठीक है. To ensure that the whole engagement team is aware the risk of responsibilities of fraud and error, IAS ISA is
require that the disclosure will help us with the team. For member not present at the meetings, the major partners will determine which matters should be communicated to them. If the fraud is detected, the auditor must report the management to दूसरा भी। एक चीज बताओ, बता। ये रुक जा। अपन प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म के बाद वो सब भी लिख देंगे, बीइंग अलर्ट टू कंडीशंस एंड यहाँ से वो ना यहाँ तक, यहाँ से ना यहाँ तक इन्होंने कचरा लिखा है। कचरा। ये तो हाँ, देख ये ठीक है कि तू आईएएस का स्टैंड करेगा, फ्री फ्रॉम होना चाहिए, फिर कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो फ्रॉड नहीं करे, मतलब रिस्क मटेरियल मटेरियल नहीं होना चाहिए, फिर इसमें हम डिस्कस करेंगे। सफिशिएंट एप्लीकेट अपन लेंगे, फिर यहाँ पे प्रोफेशनल स्केप्टिज्म करेंगे और यहाँ पे लास्ट में डिटेक्ट करेंगे। ठीक है, ये सही है। इसको याद रखने का इतना कुछ मतलब नहीं। देखो याद है तो अच्छी बात है। एक ये चीज मेरे को अच्छी लगी है का, ये वाला, जो चीज से तू एरर डिटेक्ट करना जरूरी नहीं कि तुझसे फ्रॉड भी डिटेक्ट कर सकता है, बस। ये फिर ये तो बात बंद तो हो आटम रही है। याद है।